हेलो लोहिता, गुड नाबेन, wie geht's? पिछली वीडियोस में हमने किए थे कुछ एडजेक्टिव्स जो मेनली A2 से B1 लेवल के हैं। आज उस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और एडजेक्टिव करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। एगाल। एगाल मीन्स इनडिफरेंट, ऑल द सेम। जैसे कोई किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस तरीके से, उस सेंस में आता है। दस इज मी एगाल मीन्स आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स ऑल द इट्स ऑल द सेम टू मी, ठीक है? Mir sind meine Noten egal. Means I don't care about my notes. My grades are all the same to me. I'm indifferent towards my grade. मतलब मुझे मेरे ग्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी आए। राइट? सो mir sind meine Noten egal. Mir is dative, मतलब for me in that sense. Meiner Mutter ist Politik egal. मतलब meiner Mutter, यहाँ पे अगेन dative. सो मेरी मम्मी के लिए, मेरे मदर के लिए पॉलिटिक्स एगाल, मतलब इनडिफरेंट, डजेंट मैटर मच। Einzig, einzig is ओनली, सिंगल, लोन, अकेला, उस सेंस में जो होता है। जैसे डू बिस्ट माई einziger फ्रेंड, ठीक है? मतलब यू आर माई ओनली फ्रेंड, मेरा और कोई फ्रेंड नहीं है, तुम अकेले हो, सो उस सेंस में आएगा। डू बिस्ट माई einziger फ्रेंड, राइट? ये einziger er क्यों लग गया? बिकॉज देयर फ्रेंड। Er sagte kein einziges Wort, so das Wort einziges Wort। Er sagte kein einziges Wort, मतलब उसने एक शब्द भी नहीं कहा। He didn't say even a single word. Das ist nicht das einzige Problem. Das ist nicht das einzige Problem. Means that's not the only problem. Erfolgreich means successful. Das Experiment war erfolgreich. It's so simple. The experiment was successful. Chetan Bhagat ist ein erfolgreicher Autor. Means Chetan Bhagat is a successful writer. Er war anfangs nicht sehr erfolgreich. Anfangs means am Anfang, in the beginning. ठीक है? Initially, शुरुआत में. So er war anfangs nicht sehr erfolgreich. मतलब initially he was not very successful. Wir haben das Sportfest erfolgreich durchgeführt. Durchführen is separable verb, that means to execute, to carry out, किसी चीज का संपादन करना, ठीक है? किसी चीज को एग्जीक्यूट करना। So we haben das Sportfest erfolgreich durchgeführt, right? Sportfest is sport festival. Erreichbar, erreichen, ये किससे बना है? Erreichen, erreichen is to reach, to achieve. So erreichbar, बार किसी चीज में लगता है तो उसको एडजेक्टिव बना देता है, राइट? So achievable, reachable, accessible. Ich bin momentan, momentan is at the moment, presently. Ich bin momentan telefonisch nicht erreichbar. At present, telephonic, I am not available telephonically. I am not reachable. Das Dorf ist leicht erreichbar. Means the village is easily accessible. यहाँ पे accessible का सेंस आएगा, मतलब वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे पहुंच सकते हैं, reachable. Das Dorf, Dorf is village. Das Dorf ist leicht erreichbar. अब leicht क्या है? leicht means easy and easily. अधिकतर एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो एडवर्ब की तरह भी यूज होते हैं, ओके? जैसे अगर बोला जाए das ist sehr leicht means it's so simple, it's so easy, but das Dorf is leicht erreichbar। तो यहाँ पे लाइफ क्या बोल रहा है? एडजेक्टिव अराइव बार के बारे में बोल रहा है। सो दैट विल बिकम एन एडवर्ब, सो इजिली एक्सेसिबल। Der Bürgermeister ist jetzt nicht erreichbar. Bürgermeister is what? The mayor, ठीक है? Der Bürgermeister ist jetzt nicht erreichbar means the mayor is not available, not reachable. Ewig, ewig is eternal, शाश्वत जिसको बोलते हैं हिंदी में, फॉरएवर, ठीक है? जो चीज कभी खत्म नहीं हो, हमेशा चले, ठीक है? सो niemand lebt ewig, leben is to live, no one lives forever, कोई भी हमेशा के लिए नहीं जीता है। niemand lebt ewig। das ist doch kein ein ewiges Problem। das ist doch kein ewiges Problem। अब ये doch क्या है यहाँ पे, इसको समझते हैं। इट्स बेसिकली पार्टिकल। जैसे अगर मैं कहूँ मैं ये काम कर दूंगा, सो इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस। इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, मैं ये काम कर दूंगा, मैं ये काम कर ही दूंगा। अगर मैं ऐसे बोलूँ, फिर मैं बोलो मैं ये काम तो कर ही दूंगा, ठीक है? सो ये जो आगे वाले दो सेंटेंसेस उसमें थोड़ा जोर आ रहा है, सो दीज सेंटेंसेस आर एम्फैटिक। फाइन, तो यही काम करता है पार्टिकल। यहाँ पे डॉफ इज यूज्ड एज ए पार्टिकल। अभी इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ये सेंटेंस बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, दिस इज काइंड एविगेस प्रॉब्लम, इट्स नॉट ए इटर्नल प्रॉब्लम, ठीक है? बट यहाँ पे थोड़ा जोर देके ये काम कर रहा है। एविगर, एविगर लीवर गिफ्ट इज निक्स्ट।
बस गिफ्ट मीन्स देर इज देर आर, ठीक है। सो एविगा लीबा गिफ्ट इज नहीं, मतलब इटर्नल लव जैसी कोई चीज नहीं है। ओके, सो देर इज नो इटर्नल लव, देर इज नथिंग सच एज इटर्नल लव। Exact. Exact is exact, precise, accurate, to the point. In that sense, it's used. Das Flugzeug, Flugzeug is what? Plane, aeroplane. Das Flugzeug hob exakt 6 up. ठीक है? So this is basically separable. Abheben. Abheben is to raise, to rise, to take off. Plane के sense में take off means the plane took off. So abheben का past tense है hob. Hope up. So the plane took off exactly at 6 o'clock. ठीक है? So das Flugzeug hob exakt 6 up. Ich würde exakt dasselbe sagen. Dasselbe means the same. Means I would exactly say the same thing, right? Das ist eine exakte Wiedergabe des Originals. Okay? That means this is an exact, accurate, precise reproduction of the original. Wiedergabe is reproduction, true copy. ठीक है? Fest. Fest is fixed, firm, solid, tight. ठीक है? So er hält sie fest. Er hält sie fest means he is holding her tightly, firmly. ठीक है? Er hat feste Prinzipien. Prinzipien is principles. Er hat feste Prinzipien means he has fixed principles. कोई चीज फिक्स्ड है इसका मतलब उसको आप हिला नहीं सकते, डिगा नहीं सकते, राइट? मतलब वो अपने उसूलों से हिलता नहीं है। Hast du ein festes Einkommen? What is Einkommen? It's written with capital E. So it's a noun. Einkommen is income. Hast du ein festes Einkommen? That means, do you have a fixed income? Dieses Spiel hat feste Regeln. Feste Regeln means fixed rules. Again, जिसे कोई deviate नहीं कर सकता. So this game has fixed rules. वेयर लेग द स्पील रेगन फेस्ट। अब यहाँ पे देखिए फेस्ट आ तो रहा है बट बेसिकली इट इज फेस्ट लेगन। ठीक है, मीन्स फेस्ट लेगन मीन्स टू सेट, टू डिटरमाइन, कोई नियम सेट करना। सो वेयर लेग द स्पील रेगन फेस्ट मीन्स हु डिटरमाइंस, हु सेट्स द रूल्स ऑफ द गेम। नेक्स्ट फेट। फेट इज फैटी एंड फैट, दोनों सेंस में। अगर कोई इंसान मोटा है तो उस सेंस में भी लगता है। ऑल दो फैट के लिए एक दूसरा एडजेक्टिव है डिक। ठीक है, एक बिन डिक मीन्स आई एम फैट, राइट? फैट भी लगाते हैं बट मोस्टली इट्स ऑल्सो यूज फॉर फैटी, जैसे फूड वगैरह चीजें, ठीक है, जिसमें ऑयल ज्यादा है, फैटी चीज। सो डस एसन इज टू फैट मीन्स द फूड इज टू फैटी। श्वाइन, श्वाइन एंड फ्लाइज इज टू फैट। श्वाइन एंड फ्लाइज इज व्हाट? यहाँ पे दो वर्ड है, आप देखिए, ठीक है। सो श्वाइन, व्हाट इज श्वाइन? श्वाइना, दैट इज पिग, एंड fleisch is meat. So now you understood it. I'm a pure veg, so I won't describe it much. Schweinefleisch is zu fett. Ich werde fett means I'm getting fat. Werden is to become. Okay? So I'm getting fat. Froh. Froh is glad, cheerful, happy, खुश मिजाज। Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr वैसे भी एक रेडीमेड फ्रेज चलता है। किसी को हैप्पी न्यू ईयर बोलना है तो कैसे बोलेंगे? Ich wünsche dir frohes neues Jahr, या सीधे सीधे frohes neues Jahr, जैसे हैप्पी न्यू ईयर। So I wish you all a happy new year. Darüber sind wir froh. Darüber means about that. Darüber, ठीक है? So it's a combination. Darüber sind wir froh means we are happy about that. Wenn meine Freundin mich besucht, bin ich froh. Wenn meine Freundin mich besucht, bin ich froh. Means when my friend visits me, I'm happy. Er ist froh, wenn seine Freundin ihn besucht. ठीक है, उसी को आप इस तरीके से बोल सकते हैं। Er ist froh, is happy, when seine Freundin ihn besucht. When is a conjunction, जो लग गया तो verb last में जाएगा। That we've already done. Fröhlich, ठीक है, fröhlich ये भी सिमिलर है, cheerful, happy. Sie ist immer fröhlich, मतलब खुशमिजाज, cheerful in that sense. Sie ist immer fröhlich means she is always cheerful. Sie sieht immer fröhlich aus. अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है। Sehen means इसे einen Film, मतलब सिंपल देखना, कोई चीज देखना। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू सी, टू लुक। बट अभी लुक का इंग्लिश मतलब क्या होता है? यू आर लुकिंग कंफ्यूज्ड। लुक एट द पिक्चर मतलब पिक्चर को देखो, ठीक है, फाइन, बट यू आर लुकिंग कंफ्यूज्ड। तो आप कंफ्यूज को देख थोड़ी रहे हो। यहाँ पे जो लुक का मतलब है, हिंदी में इसके दो अलग अलग शब्द हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा।
जैसे देखना और दिखना, तुम जरा कंफ्यूज दिख रहे हो, ऐसे थोड़ी बोल सकते तुम कंफ्यूज देख रहे हो, ऐसे नहीं बोल सकते ना। तो ये जो आउसजेन है ये वही चीज है, दिखना नॉट देखना। सो जी जीट इमा फ्रियोलिक हाउस मीन्स शी ऑलवेज लुक्स चीयरफुल, मतलब वो हमेशा खुशमिजाज दिखती है। Mein Lehrer ist ein fröhlicher alter Mann. My teacher is a cheerful old man. Mein Lehrer ist ein fröhlicher alter Mann. Wer schaffen will, muss fröhlich sein. Wer schaffen will, muss fröhlich sein. So what is schaffen? Schaffen is like कुछ काम करके दिखाना, प्रोड्यूस, एग्जीक्यूट, accomplish, ठीक है, accomplish is the right word. So अगर आपको कुछ करके दिखाना है then you have to cheerful. It's a German proverb, कहावत है, ठीक है। Folgend, folgend is कहाँ से बनाइए, folgend, folgend is to follow somebody, and it takes dative. Folgemia means follow me, right? Folgemia means follow me. So folgend से बन गया folgend, right? लास्ट में डी लगा के उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है जर्मन में, कभी करेंगे आगे डिटेल में। सो folgend is following. Schreiben Sie bitte die folgenden Sätze ab. Schreiben तो लिखना है, ठीक है, बट व्हाट इज abschreiben? मतलब कहीं कुछ लिखा है उसको आप देख के कॉपी करके लिख रहे हैं, सो उसको बोलते हैं abschreiben, राइट, टू कॉपी समथिंग। सो schreiben Sie bitte die, अगर अपनी मर्जी से आप कुछ लिख रहे हैं तो वहां पे abschreiben नहीं लगा सकते, सिर्फ schreiben लगाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल schreiben Sie bitte einige Sätze, write few sentences, schreiben Sie bitte einen Aufsatz, प्लीज राइट एन essay, बट abschreiben मीन्स कहीं पे कुछ लिखा है उसको आप देख के लिख रहे हैं, ठीक है। या कोई बोल रहा है, कोई डिक्टेट कर रहा है, फिर उसको देख, उसको सुन के आप लिख रहे हैं। सो bitte schreiben Sie die folgenden Sätze ab means please copy the following sentences. Die folgenden Beispiele sind einfach, मतलब the following examples are simple, easy. Beispiel is das Beispiel, die Beispiele. Example. Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere Beispiele. Means auf den folgenden Seiten. अगर कोई सेंटेंस लंबा है उसको तोड़ तोड़ के समझिए, इट्स सो इजी। Auf den folgenden Seiten. What is Seite? Die Seite, die Seite means page. मतलब on the following pages. Seiten plural हो गया तो pages. Tendency means you will find what weitere Beispiele. Weiter is what? Further, next, or in that sense. So on the following pages you will find more, yeah, further examples. Freiwillig. Freiwillig is voluntary, right? Diese Organisation ist von freiwilligen Spenden abhängig. Abhängig sein von means to depend on something, right? It's a phrase. So diese Organisation ist von freiwilligen Spenden abhängig. What is Spenden? Spenden as a verb means to donate. But यहाँ पे देखिए capital है तो noun हो गया. So it is die Spender means donation. Die Spenden plural, so donations, right? ऐसे समझ। Diese Organisation ist मतलब this organization is dependent on voluntary donations, ठीक है। Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Teilnahme, अब ये कहाँ से आया? Teilnehmen means to take part, to participate in something. Die Teilnahme अभी उसका नाउन बन गया, मतलब participation, भाग लेने की प्रक्रिया, right? So the participation is voluntary and kostenlos is free, free of cost. Sie haben das freiwillig gemacht. Okay, means they have done it voluntarily. अब यहाँ पे देखिए freiwillig is also used as both as adjective and adverb. Last वाले sentence में क्या मिलेगा आपको? It is adverb. Sie haben das freiwillig gemacht. They did it voluntarily. ठीक है, उन्होंने अपनी मन मर्जी से ये काम किया। Früh, früh is early. Okay, so mein Großvater steht früh auf. Again, aufstehen, separable verb. We have already done this. Mein Großvater steht früh auf means my grandfather, okay, gets up early. Wir nehmen den Zug morgen früh. Okay, means we'll take the train tomorrow morning. Morgen is tomorrow. छोटा m से लिखा है तो tomorrow, बड़े m से लिखा है तो morning, right? इसका ध्यान रखें। Wir nehmen den Zug morgen früh means we'll take the train morning, sorry, tomorrow morning. Ich stehe nicht früh auf. Ich stehe nicht früh auf means I don't get up early. Simple. Gar, gar nicht. Mostly it's used in with gar nicht, negative sense में.
So she schläft gar nicht, मतलब she doesn't sleep at all. Gar nicht means not at all. Gar kein means not any, not any at all in that sense. बिल्कुल नहीं. So sie schläft gar nicht. Sie schläft nicht मतलब वो सोती नहीं है. But sie schläft gar nicht मतलब वो बिल्कुल नहीं सोती. She doesn't sleep at all, right? सो नेगेटिव सेंस में एट ऑल वाला लगाना है चीज, बिल्कुल नहीं वाली बात तो गार्निश लगा सकते हैं, गार काइन लगा सकते हैं, एज द केस में बी. दिखावे गार काइन गिल्ट. अब यहाँ पे देखिए गार्निश नहीं आएगा, गार काइन आएगा, बिकॉज अगेन वी हैव डन दिस negation with kain oder nicht, right? So a noun is negated, so it's used kain. Ich habe gar kein Geld. I have no money at all. I don't have any money at all. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe eine Ahnung. Ich habe keine Ahnung means I have no idea. ठीक है, मुझे कुछ जानकारी नहीं इसके बारे में. Ich habe gar keine Ahnung means I don't have any idea at all. I have no idea at all. Gehörlos. Gehörlos means deaf. Gehörlos मतलब जो सुन नहीं सकता. Er ist gehörlos. Simple. He is deaf. Gehörloser Menschen können Zeichensprache sprechen. Gehörloser Menschen means deaf people can speak what? Zeichensprache. Zeichen is symbol, sign, and Sprache is language. So, sign language. Simple. Mein Freund ist gehörlos, aber sehr intelligent. My friend is deaf but very intelligent. अब यहाँ पे देखिए aber er ist भी लगा सकते हैं, उसको उड़ा भी सकते हैं, वो एक तरीके से कॉमन हो रहा है दोनों सेंटेंस के बीच में. Mein Freund ist gehörlos, aber er ist sehr intelligent. या mein Freund ist gehörlos, aber sehr intelligent. फाइन, ऐसे भी चलता है. Gemeinsam. Gemeinsam मीन्स सब मिलके, टुगेदर, ज्वाइंटली, एक साथ, ये है सेंस. Hat Europa eine gemeinsame Sprache? Again, this is also used as adjective and adverb, right? Hat Europa eine gemeinsame Sprache? Does Europe have a common language? So, common. Sie haben ein gemeinsames Hobby. Means they have a common hobby. Wir reisen gemeinsam. ठीक है, मतलब reisen is to travel. We are reisen gemeinsam means we are traveling together. Gefährlich. Gefährlich कहाँ से आया? Die Gefahr. Die Gefahr is a noun that means danger. So gefährlich. लिख लगा के भी एडजेक्टिव बनता है. ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन में ये सारी चीजें हम करेंगे डिटेल से आगे. gefährlich means dangerous, hazardous. Das ist gefährlich, that's dangerous. So simple. Dieser Mann ist gefährlich मतलब this man is dangerous. Diese Methode ist gefährlich. Diese Methode ist gefährlich means this method is dangerous. Blei ist gefährlich. Blei is lead. Lead is dangerous. Radioaktive Stoffe sind gefährlich means Stoff is what? Der Stoff, die Stoffe means matter. ठीक है? So radioactive Stoffe sind gefährlich means radioactive matters are dangerous. Fine. So with this, we did so many adjectives that are mostly used in A2 or B1 level. ठीक है? So thank you so much for your time and patience. See you in the next session. Auf Wiedersehen.